में सबसे पहले बात करेंगे जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के बाद जलाओ घिराव के वाक़यात के मुकदमात में मतलूब मजीद 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 145 हो गई है। 5 मुकदमात में 134 नामजद अफराद समेत 1470 मुल्जिमान मुलव्वस हैं। जड़ावाला इंतजामिया ने जलाओ घेराव के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए, 86 मकानात में तोड़फोड़ की गई और जलाया गया। दूसरी तरफ जड़ावाला के उजड़े मसीहियों की अपने जले घरों को वापसी शुरू हो गई है। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने गिरजा घरों, मसीही बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। हालात मामूल पर आने के बाद उजड़े मसीहों ने अपने जले घरों की तरफ रुख कर लिया। आग की नजर किए गए गिरजा घर देख कर आंख अशबार थी। मुतासरीन का कहना है कि बाहर से आए हमला आवरों का सुनकर घरों और इबादत गाहों को छोड़कर जान बचाना पड़ी। मुश्तइल अफराद ने किसी पर रहम ना खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। लोगों के घरों पे हमला करना शुरू कर दिया, छतों पे चढ़े हैं। उन्होंने कोई ऐसा केमिकल फेंका जिसकी वजह से ना जल्दी आग लग गई। कुछ जो हमारे पड़ोस में मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं, उन्होंने हमारे साथ स्टैंड लिया। अलार्म सुन के हम उठ गए 6 बजे, देखा तो हम बच्चे जैसे भी थे हम लेके अपने घरों से निकल पड़े। जब पुलिस साथ देती तो ये काम ही नहीं होना था। उनको कहा शैल बरसा दो, वहाँ शैल बरसाए नहीं। जब उन पर पुलिस रोड़े चले ना, वो शैल बरसा रहे। हमारे शहर के जो लोग थे वो तो पुरअमन थे, जो लोग बाहर से आए ना गांव वगैरह से, वो उन्होंने फिर किसी की नहीं सुनी। जड़ावाला इंतजामिया ने जलाओ घेराव के वाक़यात में नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव के वाक़यात में 19 चर्च जलाए गए, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 86 मकानात में तोड़ फोड़ की गई और जलाया गया। रिपोर्ट में क्रिश्चियन कॉलोनी में 2 चर्च और 29 मकान में तोड़ फोड़ और जलाने को रिपोर्ट किया गया। ईसा नगरी में 3 चर्च जलाए गए, 40 मकानात को नुकसान पहुँचाया गया। चक 240 में भी 2 चर्च जलाए गए, 12 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। चक 238 में 2 चर्च और 5 मकानात को जलाया गया। चक 126 में 4 चर्च, महल्ला फारूक पार्क और महारा वाला में 2 चर्च जलाए गए, जबकि महल्ला कैंप और टेलीफोन एक्सचेंज के करीब एक चर्च को जला दिया गया। जड़ावाला में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल्ला महमूद की सरबराही में कायम 8 रुकनी कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। जड़ावाला में मसीही बरादरी पर बदतरीन हमलों में मुलव्वस मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। गुज़िश्ता रोज अदालत ने 125 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। आज भी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरमीम केस फुल कोर्ट सुने। मरियम नवाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। मरियम, क्या कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का अपने एतराज़ में और चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कहा गया है? जी, आज जब ये इस केस की समाअत हुई जो कि नैब तरमीम से मुतालिक है और ये चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है, तो केस की समाअत के आगाज में ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ कहना चाहते हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी ये कहा था कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और अब वो इस केस में भी यही समझते हैं कि इस केस को फुल कोर्ट ही सुने, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो कि अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसके तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात कम से कम 5 मेंबरान जो है वो बेंच के सुन सकते हैं। और उनको ये लगता है कि क्योंकि इस तरह के जो नैब तरमीम जैसे केसेस हैं इन्होंने आइंदा के लिए भी मामला तय करने हैं, तो बेहतर है कि इस तरह के केसेस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो वकील हैं मखदूम अली खान और जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनसे ये कहा कि वो कोर्ट की मुआवनत करें कि कैसे यही 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन सकता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मखदूम अली खान जो कि इससे पहले वजीर आजम के जानिब से जो है वो इस केस में पेश हो रहे थे और आज भी उन्होंने जो है वो केस काबिल समाअत होने के मामले पर दलाइल देने का जब कोशिश की, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रोकते हुए कहा कि पहले जिस पॉइंट के ऊपर एतराज उठाया गया है उस पॉइंट पर जो है वो आप अपने दलाइल दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो दौरान समाअत ये भी कहा कि अगर अदालत ये समझती है कि जो नैब तरमीम से मुतालिक केस है इसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है तो ठीक है, बसूरत दीगर इस चीज़ पर गौर करना होगा कि ये केस जो है वो यही बेंच सुन सकता है या नहीं। इसके बाद अदालत ने जो
चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील आज क्योंकि ख्वाजा हारिस अपनी तबीयत नासाज होने के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके, उनके मुआविन वकील को भी जो है वो अपना तहरीरी जवाब भी जमा कराने का वक्त दिया है। 1 हफ्ते का वक्त दोनों वकला को दिया गया है और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट का हवाला देते हुए कहा कि वो जल्द रिटायर होने वाले हैं और वो चाहते हैं कि वो इस अहम केस को, जिसको कि अदालत 47 समातों से सुन रही है, उसका फैसला देकर जाए। बसूरत दीगर ये उनके लिए बायस शर्मिंदगी होगा। तो अभी केस में शुक्रिया। रानीपुर में पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से मरने वाली बच्ची की कब्र कुशाई के लिए अब तक मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जा सका। जुडिशल मजिस्ट्रेट रानीपुर ने गुज़िश्ता रोज़ डीजी हेल्थ की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की थी। अब तक डीजी हेल्थ की जानिब से बच्ची की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जा सका है। SSP खैरपुर का कहना है कि उम्मीद है आज मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। कब्र कुशाई कल तक हो सकेगी। नौशेरो फेरोज़ में बच्ची की कब्र के करीब पुलिस तैनात कर दी गई है। दूसरी पुलिस की तहकीकाती टीम ASP नोमान जफर की सरबराही में पहले केस में नामजद मुलजिम की हवेली, बाद में नौशेरो फेरोज़ में मकतूला बच्ची के गांव पहुंची। तफ्तीशी और फॉरेंसिक टीम ने हवेली में क्राइम सीन से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने मुतासरा खानदान के अफराद, अहम गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए हैं। तेरह साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीप ने इस्लामाबाद के घर में खुद पर बीती रुदात सुना दी। बच्ची की तशद्दुद वीडियोज़ भी सामने आ गई। टांगों पर जलने के निशानात जाहिर हैं। अंदलीप का कहना है कि उस पर 2 बार कुत्ते छोड़े गए। जी, मैं अंदलीप नाम है मेरा। मैं वहाँ पे काम करती थी। मेरे पर वो जुल्म करते थे। मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर। मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे। मुझे हैंगर से मारते थे। उनके बच्चे भी मारते थे और उन्होंने मेरे पर डॉग्स भी छोड़े हैं 2 दफ़ा। अपने डॉग्स उनके थे वो भी 2 दफ़ा छोड़े हैं मेरे ऊपर। और उनके मामू जो थे वो भी मेरे साथ ऐसे ही बदतमीज़ी करते थे। वो भी 1-2 दफ़ा उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, पर मैंने उन्हें डांटा तो बाजी ने मुझे इतना मारा है उनकी वजह से भी कि तुम्हें उन्हें मतलब क्यों उनसे ऐसे बदतमीज़ी से बात की है। मैंने उन्हें बताया तो बाजी कहता है ये सच हो ही नहीं सकता। जी, मैं इतना डरी हुई थी कि मैं उनके आगे आवाज़ ही नहीं निकाल सकती, क्यों भी नहीं कह सकती। तवीज़ पिलाती थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार-उल-हक काकड़ वफाकी काबीना के इजलास में इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। Dr. Shamshad, whom we have been seeing on the TV screen for many years, Jamal Shah, Murtaza Solangi Saab, Gohar Saab. If I am not naming anyone doesn't mean that I'm not acknowledging you. I'm just giving you a feel that I'm really proud that we have got one of the best team. I'm hopeful that Almighty Allah would enable us to lead and steer this nation in this interim period. I'm very well aware that we are here for an allocated time. We do not have some perpetual mandate to serve this nation or country. But in given allocated time, हम कोशिश ये करेंगे कि कोई foundations lay करें where we have sense of continuation of national and international commitments with all the previous governments which they have given to the different forums. And in continuation of that, we will try to support the new initiatives, whatever the law and constitution allow us to do. Especially Special Investment Facility Council. This is a dream come true. Even as a child, when I used to think about Pakistan, we would have been told that Pakistan एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान के पास बड़े rich mineral resources हैं, और as hailing from Balochistan, we would take a lot of pride in our natural and mineral resources. But we never knew that what those mineral resources were. But a day has arrived when, thank God, with the support of all the institutions in which Pakistan military is in lead, with its ablest leadership, to support, facilitate, encourage, and realize this old national dream. मेरा अपना view ये है कि it is not idea or a dream of an institution. An institution may be in the lead role,
but it is collectively owned by around 2,500 million people of this country. So we all own it, we all support it, and we will all contribute jointly towards it. Dusra, I know it's a polarized society, and in this polarized environment, we would try to differentiate between politics and law. There is a rule of law and there is a rule of order. We would ensure that rule of order is not compromised in any way. Rule of order would ensure and lead us towards the rule of law. If there is chaos, if there is anarchy, no governance system, no secular system, no religious theocratic system, whatever the people of a concerned territory wish to live with it, you can't have that. So we know the sanctity of the order. That would be kept at any cost. Pakistan is owned and shared by all ethnicities, by all creed, by all religious backgrounds. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, his famous speech of 11th August was a projection for the idea of a citizenry where no identity-based rights would be prescribed. Rights will not be given to the people on the basis of noun, right? Rather, it would be allocated on the basis of adjective, on the basis of conduct, on the basis of character, on the basis of behavior. The best of the best has to come and excel in this society. There are many dreams around the globe, but let's start having a vision of a Pakistani dream, and let's realize this Pakistani dream. Pakistani dream is the dream of our soul. It is imbibed by the ideas of Iqbal, the enlightened Iqbal. We would strongly discourage rigidity, be it in any form, in this society. We do not stand for the forces of darkness. Rigidity may come in the garb of religion or secularism or any other form. These extreme attitude, they are not just unwelcomed, they would be discouraged. They would be curbed and controlled by the law. I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. We have a sense of sanctity of the taxpayers' money, this money on which we are having today's meeting, consuming this water, tea, traveling, doing any sort of actions. It is paid by the people of Pakistan, and we have that sense of sanctity towards them. By the common vendor, he contributes towards our gathering. By a shopkeeper, by a civil servant, by a teacher, by a lawyer, they all contribute towards us so that we can deliver for them the social services. We can provide that secure environment for them. So that utmost duty, inshallah, maybe it is for a month, 2, 3, I don't know, or 3.5, whatever the allocated time is, we will demonstrate not through our words, but through our actions. The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. Pakistani state and society does not align and identify with such elements. They may be from us, but they are divorced from us. They are divorced from our identity process. We do not identify with them. We want to keep ourselves distant to them. One of the main idea
of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's message with all the monotheist tradition, with all the Abrahamic tradition, was, and will remain the idea of dhami or zami or minority. They always envisioned that there would be a situation where your community probably would be in majority. So when you are in a majority, the minority has to be protected, not on the basis that they would convert to your worldview, not on the basis that they have to have the same kind of world outlook. They can differ with you, but the basic human dignity, the security, their provision and sustenance has to be ensured by this divinely inspired idea. And Pakistan, alhamdulillah, was created on those tayyaba and noble principles. Pakistan is the product of noble idea. Pakistan is a romance. And let's start realizing that romance with today's first cabinet meeting. I'm sure you would be given some task, and I expect that within 3 to 4 days, with all the inline departments, we will be having briefings, and with Godspeed, we will start, inshallah, to deliver. Last but not the least, we have seen some sabotage activities on May 9th. I would explicitly express my not just discomfort, but it was a way of disappointment that how and where did we reach on that day. Not just that our military installations were attacked. Gentlemen and ladies, let me remind you, when I was growing up, a new virus was emerged by the name of AIDS, and it was acquired immunodeficiency syndrome. The nature of the virus was that it would attack the immune system of the body, and then you could have died. It would have been fatal even for a very mundane diseases like flu. So for any polity, if its immune system is attacked, it leads towards its fatality. And in our context, these emblems, these symbols are important. These state symbols, when they are attacked, state doesn't disappear or vanish within a day or 2 or a week. It's a process. And the initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality. Our core issue, Kashmir, cannot be ignored, as it does not lie in our memory or in mind. It lies in our soul. And body can transform, soul can't. So for us, Kashmir is eternal. Thank you so much. निगरान वज़ीर आज़म अनवार-उल-हक काकर काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यकीन है कि हम सुरखरू होंगे। मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है, एक तजुर्बाकार और बेहतरीन टीम है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं करेंगे। रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी होगी। माशी मसाइल के हल के लिए उन्होंने कहा कि बेहतरीन इक़दाम करेंगे और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सरदार अली मर्दान डोंकी के नाम पर इत्तफाक राय हो गया है। गवर्नर ने अली मर्दान डोंकी के बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक अली मर्दान के नाम पर इत्तफाक हुकूमती और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के दरमियान हुआ, जिसके बाद अली मर्दान की तकर्री के लिए समरी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की जानिब से गवर्नर को भिजवाई गई। समरी मौसूल होने के बाद गवर्नर ने अली मर्दान डोंकी के बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दी।